हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप एवरीवन इज फाइन. सो टुडे आई एम गोइंग फॉर hiking. So me and my friends. So I will gonna show you the view of the jungle, how it looks like. So I came on this hike is after a long time. So the pathway is clear and luckily it's not raining, because if it's raining here, so it might very slippery. So you can enjoy the view. This is all forest here. So you can see this is the landmark. Very tiny, but मज़ा आ रहा है. वेदर अच्छा है आज, तो एंजॉय कर सकते हैं. So you can see this one. So this kind of things, the similar this leaves we have in Himalaya range in my hometown area. Similar, pretty similar. We got one vegetable. I know. I looked at it and I went, there's going to be a fantastic view up there. Very good. This one is also doing hiking there. What is It is huge. So this is a coconut tree, and middle of this one you will get a palm heart. So we can use that one is for the salad. Very nice, very delicious. So now we have to go up with the help of the rope. You didn't see that rope when you come in? I got two. See, it's a huge rock here. That last bit. And then I stopped. Look inside, here is a big huge cave, small cave. So this is a beautiful view from here. So we are still in the midway. We need to go third, then we're gonna get a more nice view. Look at the ocean, how beautiful it looks like.
कभी भी अंत नहीं है। देखिए, वाह। अरे बैंड बज गया है अच्छे से। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी क्या, बट मज़ा तो आ रहा है। पर थोड़ा टायरिंग है क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हाइक के लिए आई हूँ, तो इसलिए। ये देखो बीचों बीच जंगल में, बट मज़ा आ रहा है। ये देखो कितना छोटे छोटे पेड़ है यहाँ पे। अभी देखो, अभी थोड़ा फ्लैट आ गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है वॉक करने के लिए। ये देखो, सनलाइट भी आ रही है क्योंकि अभी सनसेट का भी टाइम होने वाला है। तो देखते हैं कि सनसेट देखने मिलेगा आगे। Now we are just behind the mountain, another side of the mountain. जो मैंने पहले दिखाया था वो फ्रंट है, ये बैक है। ओह माय गॉड, सन सी, ओह माय गॉड, सनसेट भी होने वाला है। See how beautiful the flower on top of the mountain. So look at this, somebody make the home. We believe that if you put the stone, one of like with the stone, if you use the stone and make the house like this, your dream will be gonna come true. So I think somebody make it this one. See, this is a huge rock. ये पूरा इतना बड़ा रॉक है। सो स्लोली हमें उतर के जाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि आज अभी कुछ टाइम पहले बहुत रेन हुआ तो थोड़ा सा अर्ली होने से थोड़ा स्लिपरी भी हो जाता है। We enter in the jungle, in the forest. So let's see
अभी कैसे होगा यहाँ पे। लास्ट टाइम तो हालत ही बहुत ख़राब हो गया था भाई। इस बार तो देखते हैं नीचे उतरने के लिए कैसे होगा। ऐसे फ्लैट में तो चलो ठीक है, जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा इतना बड़ा बड़ा रॉक आता है, तो रॉक आने से इतना बड़ा बड़ा स्टेप्स लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा टायरिंग होता है। माय गॉड, यहाँ देखिए ये ट्रीज कैसे गिरे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए भाई मेरे पीछे का व्यू कैसे है। हालत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा स्टीप है रास्ता और लीफ भी बहुत सारा गिरा हुआ है, तो थोड़ा स्लिपरी भी है, बट इट्स फाइन। तो मज़ा तो आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, गर्मी नहीं है ज़्यादा। नहीं तो यूजली कई बार ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हमने अच्छा टाइम चूज़ किया आने के लिए, तो अच्छा रहा। सो ये देखो यहाँ पे कैसे, अभी तो ये मच बेटर है। पहले तो हम ऐसे पूरे स्टीव है, पूरा खड़ी चढ़ाई उतरे हम लोग, दैट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ रोप। यस यस, सी माई फ्रेंड इज my friend is calling me because I'm just behind, coming slowly. So they was thinking if I will gonna lost the way, but no. See, पूरे बुश में है भाई, but it's very nice। थोड़ा अच्छा सा वर्कआउट हो जाएगा भाई। Now his legs are start shivering, but it will be okay. Oh, see behind. All right, so this tree that you can see, this is a cocodemar. So this is a only will gonna get in Seychelles, in Prale. So this is how it looks like. It's totally different. So this is the cocodemar. If you guys can search it in the Google and you will gonna got the information. So this is basically coconut nuts, but different kind of coconut. It is the version of like the nut itself comes like as a one female shape and one is male shape. So now we are moving forward to home. So this was the well productive day today, the hiking, but we enjoyed it. So hope you enjoyed it. So please, if you like it, please share, do comment, and please don't forget to subscribe. Till then, bye bye, see you later for another vlog. Bye bye.